दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के लिए हियरिंग चल रही है। शायद उसका 9वां या 10वां दिन था। इसमें हिंदुस्तान के धुरंधर एडवोकेट्स अपीयर हुए। कपिल सिब्बल साहब, गोपाल सुब्रमण्यम, दुष्यंत दवे, राजीव धवन और नफाड़े, पता नहीं कितने लोगों को अपीयर हुए। एक मैं वकील हूं और मुझे ये मालूम है कि जो वकील होता है वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है। वो कोर्ट को किसी भी केस के बारे में सहायता करने के लिए वहां पर प्रेजेंट होता है। लेकिन वकील होना एक अलग बात है और कुछ इश्यूज के ऊपर कायम रहना एक अलग बात है। इश्यूज ये है कि मैं वकील होने से पहले भारत का एक नागरिक हूं और भारत संविधान से चलता है। भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की संरक्षा के लिए हमारी फौज बॉर्डर पे खड़ी है और वहां पर फौजी अपनी जान हथेली पे लेकर के भारत की रक्षा करते रहते हैं। वकील हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पैसे के लिए किसी भी इशू को जो गवर्नमेंट देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए करती है, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये कहां तक अच्छा है, मुझे समझ में नहीं आता। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं और क्या कहना चाहता हूं। 1947 में अंग्रेजों ने गांधी जी और नेहरू के साथ में मिलकर के देश का विभाजन कर दिया। और देश का विभाजन किस बात पे हुआ? धर्म के आधार पर हुआ। जिन्ना साहब और उनके जैसे नेता लियाकत अली, ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग एक अलग धर्म को फॉलो करते हैं, तो हम एक अलग राष्ट्र हैं। टू नेशन थ्योरी की जो बातें हो रही थी। देश विभाजित हो गया धर्म के आधार पर, लेकिन जनसंख्या विभाजित नहीं हुई। जो नया पाकिस्तान बना था, वहां से हिंदुओं को, सिखों को और दूसरी कम्युनिटीज को तो उन्होंने भगा दिया, और जो वहां बचे उनको तो धीरे धीरे करके कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन भारत में जो मुसलमान रह गए थे, जिनको रोकने के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने पूरा पूरा जोर लगा दिया था, वो यहाँ पर अभी भी हैं और बात बात पर कुछ ना कुछ अड़ंगा करते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि 1947 में जो जिन्ना ने और जिन्ना जैसे लोगों ने जो जहर खोया था, उसको मुसलमान या हिंदुस्तान का मुसलमान भी अपने आप को हिंदुस्तानी समझता नहीं है। ये मैं क्लियर कट ओपन स्ट्रीम में बोल रहा हूँ। 1947 में देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे देश के 500 से ज्यादा टुकड़े कर दिए, सब राजाओं को स्वतंत्र कर दिया और बोला ठीक है तुम अपना अपना वो काम करो, ये है, और यहाँ से चले गए भैया बिस्तर बांध करके। बाद में 542 या 545 राजाओं ने सरदार पटेल के कहने पर भारत के साथ विलय की घोषणा की। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपने आप को अलग रखा। इस बात का, इस मौके का फायदा उठा करके पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान में जो भारतीय आजाद हिंद फौज के जो मुसलमान सेनानी थे या जो अफसर थे जो पाकिस्तान चले गए थे, वो और कबायली मिलकर के उन्होंने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। कश्मीर में जो आज की डेट में जम्मू कश्मीर अपोक्लाइड उनके पास है, उसमें से वो जो मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, यहाँ पर सारे में वो लोग आ गए। और जब वो लोग घुस रहे थे तो फिर राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता मांगी। भारत सरकार ने बोला कि भाई ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ पे सहायता तो करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब हमारे साथ में आप विलय की घोषणा कर दो। राजा हरि सिंह ने मरता क्या न करता वाला चक्कर है, उन्होंने यहाँ से विलय की घोषणा कर दी और उस चक्कर में भारत की फौजें वहां पर गई और वहां पर जब युद्ध विराम हुआ
जम्मू कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू युद्ध विराम करवाने के लिए, जम्मू मतलब पता नहीं जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट जो पाकिस्तान जाए, जम्मू कश्मीर पूरा चला जाए, ये कुछ चाहते रहे होंगे वो। तो वो नेशनल वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में चले गए, संयुक्त राष्ट्र में चले गए, और वहां से आया कि प्लेबसाइट करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। और प्लेबसाइट करवाने के लिए जरूरत ये थी कि युद्ध विराम होना चाहिए। अब युद्ध विराम हो गया तो प्लेबसाइट कैसे होगा जब आप मतलब कुछ हिस्सा पाकिस्तान की फौजों ने ऑक्युपाई करके रखा है और इंडिया के साथ में, तो प्लेबसाइट कैसे होगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में घुसेड़ा कि इस तरीके से पाकिस्तान जो कश्मीर का जो है गवर्नेंस होगा। आपको मालूम है 5 अगस्त 2019 को वर्तमान सरकार ने 370 को एब्रोगेट कर दिया है और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया है और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया है। उसका पिटीशन आज की डेट में संविधान पीस 5 जजों की पीस जो है सुप्रीम कोर्ट में सुन रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के ऊपर। मैंने हेडिंग दिया है कांग्रेस का जो टूल किट है वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गया। हुआ ये कि जब 8वें दिन की हेयरिंग चल रही थी, जब आईए सुने जा रहे थे, इंटरलोक्यूटरी पिटीशन जो सुने जा रहे थे, इंटरवेंशन पिटीशन सुने जा रहे थे, तो उसमें एक पिटीशन था अरुणाचल प्रदेश के या नॉर्थ ईस्ट का किसी एमपी का पिटीशन था जिसको मनीष तिवारी रिप्रेजेंट कर रहे थे। अभी मनीष तिवारी कौन है उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। मनीष तिवारी कांग्रेस के लीडर थे और जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, यूपी गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस समय वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। जब अन्ना हजारे का जो आंदोलन चल रहा था उस समय आप देखिए उस जमाने के मनीष तिवारी के भाषण, उन्होंने बोला था कि अन्ना हजारे कौन है क्या है, मतलब बहुत बदतमीजी से बात करते थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आकर के प्रेसे करते हैं, लेकिन कांग्रेसियों की जो असली मंशा है वो इस मनीष तिवारी के आर्गुमेंट से पता चल जाती है। मनीष तिवारी का जो आर्गुमेंट है उसको सुनिए। सीजेआई जस्टिस संजय कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, इन लोगों ने किस तरीके से मनीष तिवारी को लताड़ा है वो सुनिए, फिर बाद में देखिए क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको इसको सुना करता हूं। हाँ, और मेरा 9 o'clock मीटिंग है। ठीक है। और ये नानी नहीं दे रहे उसको। अपने कोर्ट रूम है पापा, सुप्रीम कोर्ट की लाइव। May it please your lordships, our intervention application number is 160049 of 2019, in writ petition number 1013 of 2019. In the paper books volume, the intervention application is at PDF page number 409 to 420. And our written submissions are in the written submission synopsis volume at PDF page number 610 to 644. Volume? This is the PDF volume on submission, synopsis, and formulations, Your Lordship. You represent whom, Mrs. Tewari? I represent Padi Richu, a former minister in the Arunachal government. And may I commence by answering what the Lord Chief Justice had referred to yesterday when we were going through the scheduling, that the 6 subparts of Article 371 are not before your lordship in this matter. That is absolutely correct. However, the underlying principle of autonomy in Article 370 and 371 is more or less the same. And so therefore, what your lordships will hold in this matter, either way, will have implications on Article 371. And that is what I am here to respectfully point out.
Your Lordships, the Constitution of India, in addition to being a political legal compact, also served as a national security instrumentality in terms of unifying the periphery of India to the hinterland, because national security is not merely the use of the hard power of the state. Your Lordships, when the British were ruling India, they actually managed the periphery through a process of treaties. And since there is a paucity of time, I will not lead your Lordships through the various treaties in the northwest and the northeast of India. But independent India decided to manage its periphery, its realm, through constitutional guarantees. And the reason is because they were managing an empire and we were building a republic. And that's how Article 370, which applies to Jammu and Kashmir, which is a periphery state, Article 371, the 6 subparts which apply to the Northeast, and the 6th schedule of the Constitution, which applies to Assam, Tripura, and Meghalaya, becomes relevant and germane in this matter. And may I very respectfully point out, Your Lordships, that even a slight apprehension in the periphery of India can have serious implications. And your Lordships are currently dealing with one such situation in Manipur, and I will not belabor that point further. Before I come to the Northeast, Your Lordship, I just wanted to I'm sorry for the interruption. Kindly give me a minute indulgence. And I have instructions to say this. But we have to be very, very responsible in assisting your Lordships, and we must understand the difference between temporary provision, which is Article 370, and special provisions with regard to other states, including Northeast. The central government has no intention to touch any part which gives special provisions to Northeast and other regions. This submission would have a very potential mischief, and therefore, Lord, I am interrupting and making it clear. Let us confine to a temporary provision for Jammu and Kashmir. Rest are special provisions, not temporary provisions. So there is no apprehension, and let us not try to create that apprehension. I am not putting that apprehension at rest on behalf of the central government. Your Lordship, may I very respectfully point out, I was not referring to the current central government. I was referring to the principle at stake. So why should we deal with anything in anticipation or in apprehension? We are dealing with a specific provision, namely Article 370, which was applicable or is applicable, according to you, to the Jammu and Kashmir. We don't have to really expand this ambit on what the impact of our interpretation would have on other provisions of the Constitution. Your Lordship, may I respectfully point out. There is also another thing in what he says. This is a special provision, 370. 370 is stated to be a temporary provision. Of course, the councils have argued it is not temporary, that it was temporary in the context of a assembly. All those aspects are the interpretation of 370. I think touching 371 is something which we should get into in these proceedings. And particularly once, as a constitutional principle, the Solicitor General is informing us that the government has no such intent. Why should we apprehend that, this is what the government is about to do in other parts of the country? Your That's Lordship, not before us, and I don't think we should really enter into that terrain at all. Your Lordship, may I respectfully point out, you're absolutely correct, with regard to the broader impact of, say, the abrogation of a state into a union territory. What could be the fallout in other parts of the country? Certainly that point has been made, that's present to our mind. But let's not now place specific focus on Northeast, that you will probably do this in the Northeast. I think the apprehension is allayed by the statement which has been made on behalf of the government. And beyond what was argued by the petitioners, namely that if you permit, and that is independent of Jammu and Kashmir, if you permit the abrogation of a state and its constitution into a union territory, why would it be confined only to Jammu and Kashmir? That point has been made. We have made a note of that. We will be hearing on the response to them.
My, my, Tewari, just one. I think as far as the other parts of Northeast is concerned, because your written submission specifically talk about it. That in view of the statement made, I don't think we are required to go into all that. One. Number two, as far as Article 3 and 4, whatever is there, if you have any submissions to make, just confine to those articles, the horse Northeast, that's possible. But otherwise, we are dealing with only 370 and the Article 3 and Your Lordship, I am extremely cognizant of what has fallen from your Lordships. And I will try and confine my arguments to the constitutional interpretation, primarily because you were absolutely correct that while Article 370 has a subheading as a temporary or transitional provision, 371 and the rest of the provisions are also have a subheading as a special provision. So therefore, I am not trying to equate temporary, which has been argued as permanent, with special provisions, but the underlying principle of autonomy, which runs through 370 and 371, is the same. And that's the limited argument that I want to make. So, Your Lordship, before I go on to the arguments with regard to the Article 3 and 4, may I very respectfully point out that Mr. Tewari, there are even Yeah. certain special provisions with respect to state of Maharashtra also. State of Maharashtra and Gujarat. Why should, what we are interpreting is only 370. Your Lordship is absolutely correct, and that's why. See, the interventionist. Basis is intervention, only on one principle. That is 371A. Once we are not touching that, what does the interventionist have to say in this matter? And Mr. Tewari, ultimately, you have nothing to say on Article 370. So then why should we hear? Your you on Lordship, may I 371? just make a submission with regard to 370, and then, I will try and make a submission as your But Lord there's Justice nothing that Khanna you have said with formulated regard in to your Article submissions 3 on and 4. 370. You have not formulated anything in your submissions on 370. Your Lordship, there is a submission on 370 in our written submissions. Let us In read fact, that and then we can close on that. 619 to 623 of our written submissions, Your Lordship. With respect to different territory are different. There is no conflict. 370A, one Your Lordship, A is may I different, just be 370A is completely? Your Lordship, may I be? Your Lordship, may. Your Lordship, may I make a submission with regard to 370, and then I'll go on to Article 3 and 4, which we have formulated in a. Mr. Tewari, what we'll do is we'll close your IA by taking the statement of the Solicitor General on the record, and we'll just close the IA right now so that, there's no ambiguity left in, on the adjudication on the IA or in the position of the union government on any of the states in the Northeast. Well, your Lordship, if your Lordships on the statement which has been given by the union would like to close the IA, I have absolutely no objection to it, but may I just make one submission with regard to 370 with your indulgence? And that. Tewari, that's not what the applicant has come for. Applicant has come with some other basis. Whatever apprehensions may be in the mind, which was not subject matter here, is also allayed by the statement. Why should we, in these 370 proceedings, take up, you yourself says it's a very sensitive area. Why should we take We'll up? just say I'll- that the applicant, urging their submissions through Mr. Manish Tewari, Learned Counsel, has urged that apart from the provisions
which are contained in part 21 of the Constitution pertaining to the state of Jammu and Kashmir, comma, there are special provisions in the Constitution governing the Northeast in other the states same also. part. There's no his submission in governing the Northeast in the same part. Full stop. Hence, it has been submitted that the interpretation which would be placed by this court on Article 370 may possibly impact upon the other provisions. Full stop. The Solicitor General has submitted on the specific instructions of the Union Government that the Union Government has absolutely no intent to touch or affect any of the special provisions applicable to the Northeast and to any other part of India. Full stop. Next, the reference to the Constitution bench is confined to the provisions of Article 370 of the Constitution. Full stop. There is no commonality of interest between the issues which are sought to be addressed by the intervener and the issues which have been raised in the reference to this Constitution bench. Full stop. In any event, the statement which has been made on behalf of the Union Government would allay any apprehension in that regard. Full stop. We therefore close the IA, which shall stand disposed of. Obliged, Your Lord. That's it. सुना आप लोगों ने? देखा, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष तिवारी को, अभी मैं बोल सकता है, मनीष तिवारी को धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। ये ऐसे लोग हैं। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद में खुद जज करिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता था और मनीष तिवारी के जो पार्टी है वो क्या चाहती थी। ये कांग्रेसी वकील देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये पोर्शन मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से सुनाया। आपको अगर ये अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों यारों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं किसी और विषय के साथ में फिर से दूसरे अंक में। थैंक यू।